we completed about the importance, about the scope, about the urban and the rural consumers, about their mindset, right? What is the difference between urban market and what is the difference urban and rural market, right? What is the difference between urban and rural market? Who is going to tell me about it? Who is going to tell me about it? Raise your hand. कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me about it? Tosh. Ma'am, first on the basis of infrastructure, development of and under development of roads and housing facilities, financing facility, credit policy, these all come under the infrastructure. And second one is in economy. In economy, there are in urban area the fixed income, the income of the person is fixed, but in the rural area there is no fixed income of any individual. Third one is lifestyle. In urban area, the lifestyle of the people are as much as development related to the rural area. Third one is are more aware of what are the culture in the society, and they are also aware about what are the branded in the market. And fifth one is availability of reach. They can reach to the near market as what they required. And last fifth one is what are their habits and what are the consumer behavior. These all be covered in the previous class. Okay, very good. So in today नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इट वाज एस्टैब्लिश जो हुआ है सेटअप हुआ है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. यस आशुतोष मैम, इससे सुनिए. नेशनल हाउसिंग बैंक जो है दैट इज बेसिकली सेटअप हुआ है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? जिसके लिए बिल को पास किया जाता है. व्हेन द बिल वाज पास एंड देन दैट बिकम्स द एक्ट. तो यहाँ पे जो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है दैट वाज सेट अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड दैट इज इन 1987 में इसको क्या किया गया? एस्टैब्लिश किया गया. नेशनल हाउसिंग बैंक जो है चलिए सो द नेशनल जो हाउसिंग बैंक है ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव है किस चीज के लिए? हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम के लिए. बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम के लिए बेसिकली इस टाइप के एक्ट को लाया गया है. सो द बोर्ड जो फंक्शंस है नेशनल हाउसिंग बैंक का वो क्या है? बेसिकली टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड कॉस्ट इफेक्टिव वायबल हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम. यानी हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को हम स्ट्रांगली जो है इम्प्लीमेंट कर पाए, लोग जो हाउस लोन्स वगैरह जो है वो इजिली ले पाए. ठीक है. अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, ये क्या क्या बेसिकली काम करता है नेशनल हाउसिंग बैंक? तो ये बेसिकली फाइनेंस करने का काम करता है, यानी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का, और साथ साथ में इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर सुपरविजन का काम करता है, रिड्रेसल ग्राइवेंसेस वगैरह अगर कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह है हाउसिंग फाइनेंस वगैरह का जो भी उसको भी हैंडल करता है. यानी कि ग्राइवेंसेस किसका सुनता है? कस्टमर्स का. ठीक है. अब नेशनल हाउसिंग बैंक जो है दैट इज बेसिकली रेगुलेट अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से नेशनल हाउसिंग बैंक को क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है. ठीक है. सो जो आपका ये एक तरीके से कह सकते हैं जो नेशनल हाउसिंग जो बैंक है बेसिकली दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर व्हाट? बेसिकली दैट इज प्रोवाइडेड फॉर हाउसिंग लोन्स. ठीक है. हाउस लोन्स वगैरह के लिए बेसिकली इसको बनाया गया है. ठीक है. है दैट इज इन न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और इसका पेरेंट कंपनी कह सकते हैं रेगुलेटिंग कंपनी या कॉर्पोरेट कौन है? बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और ये बेसिकली जो इसका जो मेन काम यही था नेशनल हाउसिंग बैंक का, इट वाज बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट द बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनके लिए बेसिकली काम करना. ठीक है. आवास बैंक था ये, नेशनल आवास बैंक. बेसिकली हाउस वगैरह के लिए जो लोन प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेसिफाइड बैंक को स्टैब्लिश किया गया था. लगभग 1988 9 जुलाई 1988 को स्टैब्लिश हो चुका था, आ चुका था, लागू हो चुका था. 87 में इसके लिए पार्लियामेंट के थ्रू एक्ट आया. ठीक है. और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स अगर लिखना चाहते हो तो क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है लिख लो. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक? वो क्या है ऑब्जेक्टिव? देखो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. 1988 9 जुलाई को आया है. 1987 में इसका एक्ट पास हुआ है. ठीक है. ये इसका रेगुलेटिंग बॉडी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ऑब्जेक्टिव्स को लिख लीजिए. व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक? The first one is to promote
to promote a sound, healthy, to promote a sound, healthy. देखो बैंक है तो सबसे पहला इसका काम तो लोन देना ही होगा, ठीक है, लोन इजिली प्रोवाइड करना, ठीक है, कैटर करना, लोन किसको प्रोवाइड करना, लोन कंज्यूमर्स को जिनको हाउसिंग लोन चाहिए वगैरह, तो उनके लिए दे आर वर्किंग, right? So the first objective of the National Housing Bank is to promote a sound, healthy, viable and cost effective housing finance system, to promote a sound, healthy, viable and cost effective क्यों है, मतलब कि जहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना देना पड़े। तुम लोग को मैं एक बात बताती हूँ, अभी अगर हाउस लोन लीजिए या कार लोन लीजिए या कोई भी पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं, उस पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, बट जो ये बेसिकली जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, दे आर नॉट टेकिंग एज सच हाई लोन फॉर मेकिंग द हाउस। एग्जैक्ट करेंगे, to promote a sound, healthy, viable, cost effective housing finance system, to cater all the segment of the population, यानी जितने भी population में जितने लोग हैं सबको ये सुविधा मिले, ठीक है, to cater to all the segment of the population, ठीक है। तो बेसिकली इसका मेन रीजन क्या है कि सबको आराम से हाउसिंग लोन मिल पाए, ठीक है, हाउसिंग लोन क्या हो, मिल पाए, ठीक है। एक एनएचबी से एक और भी है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसको याद मत कर लेना, नेशनल बैंक हाउसिंग बैंक, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करना, प्रॉपर फाइनेंस प्रोवाइड करना और सारे पॉपुलेशन के सब सेगमेंट तक ये लोन की सुविधा मुहैया करवाना। नेक्स्ट सेकंड क्या है, टू प्रमोट अ नेटवर्क of dedicated housing finance institutions, एक मिनट लिखिए, टू प्रमोट अ नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड, एक मिनट रुकिएगा सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएचबी, व्हाट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएचबी, लिख लिया था आप लोगों ने। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, लिखिए, टू प्रमोट अ नेटवर्क ऑफ डेडिकेटेड हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, to adequately serve various regions and different income groups. What does it mean? That basically NHB is also working for providing the basically housing finance in the various regions, means in all the regions of the India, as well as for the different income group. As we all know about the economy of India, the people are not earning in the same proportion. सब लोग सेम प्रोपोर्शन में पैसा अर्न नहीं करता है। सो एनएचबी का जो एम ये नहीं था कि दैट द लोन इज ओनली प्रोवाइडेड टू द रिच पीपल, but that is for the everyone, for every people, everyone, right? Yes Piyush मैम, सर वेरियस के बाद different income groups, ठीक है। एंड तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएचबी? एक एग्जिम बच गया है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है आपका, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है एनएचबी का, इसको लिखिए, that to making the housing credit more affordable, और जितने भी हाउसिंग बैंक्स हैं उनको भी रेगुलेट करना, दैट इज अ वर्क ऑफ द एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ओके। So basically it also help to channelize the different banks of the housing banks, as well as it is also for providing the better loan facilities to the all people, for all income groups, right? Next one is to make the housing credit more affordable. What does it mean, the affordable? That the people are able to pay the interest rate, people are able to pay the amount, right? So here they are basically providing the loan with the low interest rate as well, okay? Third one, next one, to regulate the activities
to regulate the activities of housing finance companies, for housing finance companies, to regulate the activities of housing finance companies based on regulatory and supervisory authority derived under the Act. To regulate the activities of housing finance companies based on the regulatory and supervisory authority derived under the Act. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी, मैंने जो इससे पहले पॉइंट बताया कि जितने भी हाउसिंग कंपनीज या जितने भी बेसिकली एक्ट के थ्रू जितने भी आपके हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स वगैरह जो भी हैं, उनके लिए एक एपेक्स बैंक की तरह, एक पेरेंट बैंक की तरह काम करता है. But the overall, we all know that who is the apex bank? कौन apex bank है इंडिया का? That is the RBI, Reserve Bank of India, right? So NHB is also regulated by the RBI, but the NHB is the apex bank for the other housing finance banks, right? So यहाँ पर ये आपका next हो गया. उसके अलावा it is not only working for the credit facilities, but it is also basically it also working for the encouraging the augmentation of supply of the buildable land वगैरह. यानी कि लैंड जहां पर लैंड पे जहां बिल्डिंग बन सकता है वैसे लैंड्स वगैरह को भी एक तरीके से इंस्पेक्ट करना, दैट इज द आल्सो द वर्क ऑफ द एनएचबी. ठीक है. सो द टू इनकरेज, लिखे इसमें, टू इनकरेज द ऑगमेंटेशन ऑफ सप्लाई, to encourage the augmentation of supply of buildable land and also building materials for housing ठीक है. So it not only work for providing the credit, what I said earlier, that it is not only working for providing the credit, but they are also working for inspecting the buildings, lands, ठीक है, and providing the building materials and all. ठीक है. And they are also working for encourage the public agencies वगैरह को भी encourage करते हैं for supplying and service of the land and the house. मतलब public agencies जो होंगे, जो lands वगैरह को regulate करने वाली agencies हैं, they are also working with that. ठीक है. कौन? नेशनल हाउसिंग बैंक. सो नेशनल हाउसिंग बैंक बेसिकली अगर इनको शॉर्टकट में हमें लर्न करना तो हाउ वी कैन लर्न इट, दैट नेशनल जो हाउसिंग बैंक है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट दैट केम इन 1987. इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 9th July 1988. इट वाज स्टार्टेड इन दैट ईयर. ठीक है. द एपेक्स और रेगुलेटरी जो इसका है वो कौन बैंक चलाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. It comes under which ministry? It comes under the Ministry of Finance, right? Government of India. And the main objective of National Housing Bank is that they are basically for providing the credit facilities in affordable interest rate and providing the credit facilities for each income group, providing the credit facility in each region, as well as it is also supporting the other housing finance companies or banks, राइट, जो ऑथराइज्ड होंगे उनको खास करके. ठीक है. साथ साथ में इट इज ऑल्सो वर्किंग एज द इंस्पेक्शन टीम फॉर द बिल्डेबल लैंड वगैरह जो है. इट्स ऑल्सो हेल्पफुल फॉर प्रोवाइडिंग द मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड ऑल. दे ऑल्सो वर्क विद द पब्लिक एजेंसी जो कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह को देखते हैं. दे आर ऑल्सो वर्किंग विद देम. सो इन शॉर्ट, व्हाट इज एनएचबी? सबको क्लियर हो गया. नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है? सबको क्लियर हो गया. नाउ the topic was जो हम टॉपिक कर रहे थे that was urban and rural mindset. तो हम लोगों ने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, लाइफस्टाइल देखा था, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड देखा था. So we have to continue with that topic. What is the difference between the urban market and rural market, which we already completed in I think previous classes में हम लोगों ने कर लिया है, बट इसको एक बार देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे. What is rural market research? ठीक है. तो रूरल मार्केट रिसर्च क्या है उसको देखते हैं. What is the difference between rural and urban market? Let's see क्या क्या डिफरेंस है. अगर हम बात करें अर्बन मार्केट में, तो अर्बन मार्केट जो है बेसिकली कंपैरेटिवली टू रूरल मार्केट, वहां पर एक्सप्लोर करना मार्केट, ऑर्गेनाइज मार्केट इज वहां पर ज्यादा है. कहाँ पर? अर्बन एरियाज में. बट इन द रूरल एरियाज अनऑर्गेनाइज मार्केट ज्यादा है, हार्ट्स है वहां पर, है ना, हार्ट लगना, फिर मंडी वगैरह जो है वो आपकी सबसे ज्यादा है. तो कंपैरेटिवली विल सी विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें और रिटेल के प्रेजेंट कितने रिटेल्स हैं वहां पर, तो उसकी अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज के कंपैरेटिवली रूरल एरियाज में बहुत ही कम है रिटेल सेक्टर. मॉल्स तो है ही नहीं, बट आईटीसी की तरफ से एक
आया था मॉल जो स्टार्ट किया गया था, दैट वाज नेम्ड एज द चौपाल सागर। याद आया कुछ सबको चौपाल सागर? ठीक है, यस मैम, 2000। तो हाँ बिल्कुल, तो चौपाल सागर जो है दैट वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट दैट वाज स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ आईटीसी इन द रूरल एरियाज, राइट। अभी अर्बन एरियाज में अगर हम देखें तो वी विल गेट सो मेनी रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें, बिग बाजार, रिलायंस एंड बहुत सारे हैं आपके, बिग बास्केट्स एंड ऑल, ये सब तो खैर बिग बास्केट इज द ऑनलाइन साइट। तो यहाँ पर आपकी रिटेल जो सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करें तो रूरल एरियाज में है ही नहीं, तो अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी डेवलपमेंट का चल रहा है काम, ऐसा नहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बट दैट वाज नॉट इन द सेम पेस लाइक जैसे रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज में होता है डेवलपमेंट, नॉट लाइक दैट, बट द स्टिल फॉर द मार्केटर्स, बिकॉज ऑलरेडी द सैचुरेशन पॉइंट इज देयर इन द अर्बन मार्केट में, ऑलरेडी पूरा का पूरा क्या हो चुका है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो अभी जो मार्केटर्स हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं रूरल एरियाज में, but still the development is not like that. So if we are talking about the organized sector, if we are talking about the retail, so comparison समझ में आ गया urban and rural में, this is the first point. अगर हम मार्केट में डिमांड की बात करें, so we all know that the consumption level of the urban area is comparatively high, but we cannot say about the FMCG goods, but for the luxurious goods as well, right? तो अर्बन एरियाज में क्या है सिचुएशन कि आपके लग्जरियस गुड्स का कंजप्शन हाई है कंपैरिजन टू रूरल एरियाज, बट एफएमसीजी गुड का कंजप्शन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रूरल एरियाज में हाई है, बिकॉज मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, राइट। सो मार्केट में हम दो पर्सपेक्टिव देखते हैं। पहला मार्केट में है डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर, व्हाट काइंड ऑफ डिमांड दे हैव, राइट। कॉम्पिटिशन, द सेकेंड पॉइंट इज कॉम्पिटिशन। सो अगर हम अर्बन एरियाज की देखें तो डिमांड वहां पर हाई है किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए, कंपैरिजन रूरल एरियाज में क्या है, लो है। ठीक है, कंपटीशन की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज सेक्टर द कंपटीशन इज वेरी हाई, बट इन द रूरल एरिया ज्यादातर अनऑर्गेनाइज यूनिट है, तो वहां पर कंपटीशन अनऑर्गेनाइज में उतना हाई नहीं है। वहां तो बहुत सारे रिमोट एरियाज में तो है ही नहीं, मार्केट ही नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में तो कंसंट्रेटेड कंज्यूमर्स ज्यादा है। व्हाट डज इट मीन? दैट विल फाइंड सो मेनी कंज्यूमर इन द सेम एरिया। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पटना, तो पटना में आपको एक ही जगह पे आपके बहुत सारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स यू विल गेट, but in the case of the rural areas we all know that the population is scattered, like हर जगह पे अलग अलग population है, more than 1000 भी population नहीं है rural areas में, तो मतलब कुछ कुछ villages में। तो ऐसे situation में what we can say that the consumers जो है वो क्या है आपके widely spread है, और हर एक consumer जो है आपके potential consumer है भी नहीं rural areas में। ठीक है, so ये market का situation जो है, demand जो है high low, competition ऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां तो ज्यादा उतना कंपटीशन नहीं है। कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स आर कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज, बट इन द रूरल एरियाज दैट इज हाईली बोल सकते हैं क्या है, स्कैटर्ड है। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी, वी ऑल नो व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार? एनीवन? 70%। सो दैट इज वन ऑफ द लोएस्ट, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट लो है हमारे बिहार में अभी। लेकिन स्टिल चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट इज हाई, द पीपल आर मोर रेशनल, द कंज्यूमर्स आर मोर रेशनल, दे नो दैट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर सैनिटाइजर, दे नो अबाउट इट। वी कैन नॉट से दैट रूरल पीपल डोंट नो, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी, so the people in the rural areas are more superstitious, they believe on the unnatural things and all, so their buying habits, their purchasing pattern are definitely, that is totally different from the urban areas, right? So location की अगर हम बात करें, लिटरेसी को देखें सिर्फ और सिर्फ, तो लिटरेसी में आपका अर्बन एरिया हाई है, रूरल एरिया में बहुत लो है। इनकम की बात करें so urban areas में the more people are basically engaged in the service sector, right? सर्विस सेक्टर में engaged है, तो इसकी वजह से द इनकम लेवल इज हाई। ठीक है, द पीपल आर गेटिंग द स्टेबल सैलरी, रेम्यूनरेशन, इन रिटर्न दे आर गेटिंग द स्टेबल थिंग्स, यानी उनको हर महीने सैलरी मिल रही है। बट इन द रूरल एरियाज द पीपल आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर एंड दे आर गेटिंग द सीजनल अमाउंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। सो द इनकम लेवल इज हाई इन द अर्बन, रूरल में लो है। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर, सो अर्बन एरियाज में जो एक्सपेंस है, जो खर्च करने का जो तरीका है, दैट इज
जो है वो रेगुलर है, मतलब वो खर्च जो है रेगुलर वे में अर्बन पीपल आर डूइंग द एक्सपेंडिचर. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर इन द रूरल एरियाज, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द सीजनल वेरिएशन इज देयर. एक सीजन में जब उनके पास पैसे आए, दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट. एक सीजन उनके पास पैसे नहीं है, दे आर ओनली बेसिकली बेस्ड ऑन द नीड बेस्ड प्रोडक्ट. बस अपने नीड बेस्ड अनाज, खाना पीना एंड ऑल दीज थिंग्स दे विल डू. But for the extra expenses, they are totally based on the income that they will get in a one season. So seasonal variation is there in the rural areas. Next one is needs. What is the needs? What I said that the rural people have low needs. उनके जो needs है that is low, ठीक है? But in the we can say urban में that is high. Innovation adoption. What is the innovation? What is the meaning of innovation? Anyone? What is the meaning of innovation? Innovation is something that is related with the creativity. That is when we invent something new. कुछ नया जब हम मार्केट में लेकर आते हैं, that is innovation. कुछ नया करना. अगर एक पिज्जा पे भी अगर आप नॉर्मली देखिएगा तो अगर कोई टॉपिंग अलग बदल जाता है तो that is also the part of innovation, right? कुछ नया, कुछ चेंज करके नया और बेटर लेकर आना, सोसाइटी के लिए कुछ बेटर कंट्रीब्यूट करना, that is innovation. सो इनोवेशन अडॉप्शन की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करें अडॉप्शन की, सो अर्बन एरियाज में दैट इज हाई. द पीपल आर मोर कॉन्शियस टुवर्ड द लेटेस्ट थिंग. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर परचेजिंग द मोबाइल फोन, then in that case we are watching that which have the better processor, right? यहाँ पर हम प्रोसेसर भी देखेंगे कि किसका बेटर है. So the people are educated, the people are rational, the people know about the economic situation, the people know about the durability, convenience. All these things matters for the urban people. So they are also thinking about the basically what is the latest thing, what is the latest technology in that particular mobile phone, right? So यहाँ पर अगर हम बात करें तो okay, ठीक है. तो यहाँ पर रूरल एरियाज में इनोवेशन जो है वो कम जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं. कौन? आपके रूरल पीपल. बट अर्बन पीपल जो होते हैं, दे आर बेसिकली अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एज वेल एज इनोवेशन वेरी फास्टली. बट रूरल पीपल, आज भी आपको बहुत जगह पे रेडियो मिल जाएगा रूरल एरियाज में, है ना? सो वी कैन से दैट द इनोवेशन के मामले में द रूरल पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन सो मेनी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, but the urban people are now basically taking the or adopting the new technology, right? Next one is about the product. What kind of thinking they have for product? We all know that the rural peoples are thinking, their thinking have that the sturdy product, heavy product is better, right? So that is the normal thing which we studied in the marketing mix. In the rural marketing mix, we understand that point. But today we are going to understand that what their thinking have about the product. फर्स्ट वन इज अवेयरनेस, यानी जानकारी, जागरूकता जिसको कहते हैं. सो अवेयरनेस कैसे आता है? व्हेन वी आर वाचिंग द टेलीविजन, व्हेन वी आर वाचिंग द एडवर्टीजमेंट, व्हेन वी आर यूजिंग द सोशल मीडिया, विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, राइट? व्हेन वी आर ओपन द न्यूज़पेपर, विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, राइट? हियर द प्रोडक्ट में अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो रूरल पीपल हैव लेस अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. That is not because they don't want to know, but because of the lack of the infra, the lack of the medium, the lack of the technology or communication, right? So the awareness of the product in the case of the urban area, that is high, ठीक है? But in the rural areas, that is low. Clear हो रहा है सबको? everyone, सबको समझ में आ रही है बात? जितने भी पॉइंट्स बताए सबको क्लियर है? Okay, so the product की बात करें थे अवेयरनेस की, so that is high in the urban areas, low in the rural areas. Concept की बात करें, what kind of concept of that product is, like what, how we can use that product, the knowledge of the product, details about the product. In the urban areas that is high, in the rural it is low. Positioning, what is the meaning of positioning? Who is going to elaborate it? What is the meaning of positioning? क्या होता है positioning? एसटीपी मॉडल पढ़ा होगा. पोजीशनिंग मतलब कुछ भी ऐसी तो कंट्रोल में किसी का भी कंट्रोल में रहेगा. Presentation, targeting and positioning. The positioning is related with your product, that how we can make the position of that particular product in the mind of the consumers. Like we already discussed that in Patanjali, the case of Patanjali, what they are basically advertising, that the product is free from any artificial ingredient, right? So that is the way of positioning. That is the way of
that how they are using, how they are doing this, कैसे करते हैं, because natural product है मेरा. So ये एक तरीके का एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, पोजीशन बनाते हैं अपने प्रोडक्ट का कंज्यूमर के माइंड में. MI फोन के बारे में अगर हम देखें तो what kind of positioning the MI is making in the mind of consumer, that we are providing you mobile with the latest technology but the cost of that product will be low, right? So that is the way of positioning. We can using, like for example Surf Excel, how they are basically doing the positioning, they are showing for any कोई भी stain के लिए, for any hard stain you can use the Surf Excel, it will be definitely go, ठीक है, चला जाएगा, right? So in the case of the positioning, अगर हम positioning की बात करें, कंज्यूमर को हम persuade करने की बात करें, influence करने की बात करें, so urban areas को you can influence, urban areas में in consumers को you can influence easily by persuading them, by showing them, by advertisement, ठीक है, advertisement, by doing the work of cladding, by using the hoarding, right? But in the case of the rural areas, अगर हम rural areas की बात करें, so it is very much difficult to convince the people to purchase the product. Why? Because their thinking and perception is totally dependent upon their culture, that what kind of culture they are following, right? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोजीशन अपने प्रोडक्ट का बनाना रूरल एरियाज में ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज. क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यूजर्स मेथड. यूजर्स मेथड की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे हाउ टू यूज द प्रोडक्ट. सो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, यानी कि जिसको यूज करना डिफिकल्ट है, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एज वेल, राइट, जिसको यूज करना डिफिकल्ट है. लेकिन जो अर्बन पीपल हैं, दे आर इजिली एबल टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन दैट हाउ वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट. मतलब यूज किस तरीके से करना है, यूटिलिटी को, मतलब उसको यूटिलाइज कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ लैपटॉप, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड gradually, not quickly, but gradually they are able to understand it, right? But in the case of the rural areas, it is little bit difficult for the people to tell them, to ask them to understand each and every concept, that how you can use this product. So in the way of grabbing, we can say that the urban areas में जो लोग हैं वो easily grab कर सकते हैं, but in the rural areas it is difficult to grab that how we can use the product, right? Next one is features. प्रोडक्ट के फीचर्स, जैसे अगर मैं बता रही थी कि फोन ले लो या फिर तुम एक एसी भी ले लो या कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल एक स्पेक्स ले लो, इसके फीचर्स लाइक ये फ्लेक्सिबल है या नहीं, इसका लेंस कैसा है, राइट? तो ये मैटर करता है अर्बन पीपल के लिए, मतलब फीचर्स मैटर्स, राइट, ऑफ द प्रोडक्ट. बट फॉर द रूरल पीपल समटाइम द लुक्स ओनली मैटर्स, द वेट ओनली मैटर्स, but the feature doesn't matter. ठीक है, and the rural people are more price sensitive. They are not able to basically purchase the expensive products. So the one reason is also like price. If they are getting so many features but they have to pay 10,000 rupees on phone, but if they are getting the less features but they have to pay 1,000 rupees, they are going to purchase the 1,000 rupees phone. Clear ho gaya? So this is the difference of the mindset of the urban and rural people. What is the meaning of market research? What is rural market research? So what is the meaning of research first? What is the research? Research is the scientific activities hai, analyze karna, collect karna data ko, and finally conclusion milna. ठीक है? So research is something where there is a outcome, कुछ result जिससे हमें derive होता है. ठीक है? So rural marketing research is why it is important, because nowadays what I earlier said, that the rural urban market is fully saturated. ठीक है? So the companies are moving toward the rural areas. No doubt the Hindustan Unilever, Empirical Tobacco Company, ITC, P&G, Procter and Gamble, they already moved toward the urban area, rural areas. But still the more and more company, Parle-G is that also moved to the rural areas, I guess. बहुत साल हो गए उनको भी मूव किए हुए. तो अभी बहुत सारी कंपनीज मूव करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले, बिकॉज द एनवायरमेंट ऑफ द अर्बन एंड रूरल एरियाज आर डिफरेंट, द कंज्यूमर्स परसेप्शंस आर डिफरेंट, देयर परचेजिंग पैटर्न्स आर डिफरेंट, दे हैव टू डू द रिसर्च वर्क फर्स्ट, because nowadays the total market is dependent upon the marketing concept.
कि पहले कंज्यूमर को समझेंगे फिर ही प्रोडक्ट को बनाकर सेल करेंगे। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मार्केट रिसर्च की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि रूरल एरियाज बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, वहाँ के कंज्यूमर का डिमांड अलग है, उनकी नीड अलग है, परचेजिंग पैटर्न अलग है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की कंपनी जो है वो पहले रूरल एरियाज में जाती है कंपैरेटिवली टू अर्बन एरिया, बिकॉज वहाँ नीड ज्यादा है। आपको इरिगेशन पंप यू विल इजिली एबल टू गेट, ट्रैक्टर यू आर इजिली एबल टू गेट, but every product you're not able to get because there are less retail sectors or organized sector. So what is the basically theme of the rural market research? How they are engaged in this factor, how they are engaged in the research. We'll complete this topic in the next class, that what is rural market research, how they are collecting the data, primary data, secondary data, how they are doing the research work, किस तरीके की quantitative, qualitative research studies, ठीक है, how they are collecting the data and all. We'll just learn about all these things in the next class. What is the technique of doing the research work? We'll learn in the next class. Anyone have any doubt in NHB and the urban and rural mindset? किसी को कोई doubt है? Clear हो गया सबको, everyone? So see you all in the next class.